No, sir. G. Okay, next is question number 15 is पढ़े बच्चे? G. Figure 6.1 represents wavefronts of a sound wave traveling in air from left to right. State the name given to the region A in the diagram. क्या होगा name of A in the Sir, refraction? Compression? हाँ जी because Yeah. particles The are particle का तो कहते हैं. compression. Next is region around B in the diagram. In B क्या होगा? Perfection. G. Next is on figure 6.1. Draw a double-headed arrow to represent the one wavelength. ये बचे one wavelength के लिए क्या होगा? Sir, sir हम लोग arrow बना देंगे. कहाँ से कहाँ तक? From Sir, one compression to horizontal. one Horizontal. compression. Yes. Next is और क्या हो सकता है? The loudness of the sound increases at the same pitch. Same pitch means the frequency same. Pitch depends. Frequency is same. You are increasing the loudness. So state and explain any change there would be in the pattern of the wavefront. क्या होगा बच्चे? Pattern of figure 6.1 जो है ये amplitude. Yes. Next is the wave passes in water. The wave pass होती है. State and explain any change in the pattern of the wavefront. Wavefront में क्या change है? Wave किस enter हो रही है? The wave Sir, water enters. from the. कहेंगे the speed of sound wave increases in water. Yes. And the particles will move away from each other. हम लिखते हैं of sound increases in this water as compared to where air. Next, the frequency stays the same. Frequency frequency stays frequency जो वो since we know that since V equals F lambda, the wavelength increases lambda, speed increase हो रही है
the wavelength also increase wavelength, although frequency is constant, but with the increase the wavelength is wavelength increase और वेवलेंथ के इंक्रीज होने से क्या होगा तो वेव फ्रंट आर फर्दर अपार्ट इन if front move further apart water wave fronts are moved further apart in ocean. No. Okay, next is question number 6. Figure 3.1 shows a small submarine submerged below the surface. E, the depth is given. The submarine emits a pulse of sound to detect the object in the sea. Speed of the sound is 1500 meter per second. Echo is with a time delay of after the original sound is emitted. Calculate the distance of the submarine. Find the distance. में क्या होगा sound ने first they emit the sound covers the when it hit the object it will be back towards the submarine. The total distance become plus d. जब d वक्त फिर d वापस आ गया the total distance is plus d speed into time and this is equal to d equals to b 100 multiply by 0.50 divided by 2 चेक करें क्या 1500 multiply by 0.50 divided by 375. 75. There- Next is another pulse of sound is emitted through air when the submarine. An echo is from a second object that is in the echo is received 0.50 after the pulse of sound is time is compare the distance of the second object from the submarine with the distance calculated in B part 1. Take one box and give a reason for your answer. The pulse of sound air और स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है एयर में क्या कम होगी फॉर्मूला फॉर एज टाइम तो सेम है बच्चे और इन एयर एयर इज लेस देन वाटर सही है स्पीड कम होगी ना एज कंपेयर टू वाटर डिस्टेंस भी क्या होगा फिर कम कवर होगा स्पीड इज लोअर एयर एज तो डिस्टेंस स्मॉलर व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज लोअर ऑफ साउंड लोअर एयर
वाटर। क्या वाटर में ज़्यादा होगी while air decreases if the time is same होती है टाइम टाइम जो है वो एनी कंफ्यूजन। No. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। फिगर 6.1 sends the sound wave of wavelength 0.45 meter. So traveling from left to right. Till figure 6.1 at the center of compression R cross C at the center of rarefaction mark R or double-headed arrow to represent 0.09 0.90 meters. 0.90 meter is the wavelength is so it's double wavelength 0.45 plus comes one is comes 2 lambda। तो इसमें आपको तो यहाँ पे एक हम डॉट लगा दिस इज कंप्रेशन दिस वन इज rarefaction this one is compression rarefaction and compression। now you have to find out the values of 0.9 0.90 is 2 lambda lambda होगा अगर वो कहते हैं ना जस्ट 0.45 is just 1 lambda which is the distance consecutive। now arc 0.9 lambda। Next is question is the frequency of the wave is 750 hertz। Calculate of the wave f lambda equals f बचे है 7 लैम्डा उन्होंने दिया हुआ है 0.45 चेक करें 750 into 0.4 Sir, 337.5. 337 so this is 40 meters per next is suggest a medium through which the sound wave is traveling and state your reason। ये बताएं 40 कहाँ पे होती है 40 एयर और लिक्विड Sir, air. एयर में होगी तो हम यहाँ पे लिखते हैं and the reason is the value of speed of 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 sound 40 per second। Next, another type of wave that consists of air fraction, ultrasound. State one similarity between sound of frequencies 50 Hz the ultrasound। दोनों में क्या से
क्या हर्ट्ज एंड अल्ट्रासाउंड की तो फ्रीक्वेंसी 20. राइट डाउन द polarity. Both are longitudinal waves. Both are longitudinal waves. Did one way in which the sound of frequency 750 Hz is different from the ultrasound. Ultrasound की was the frequency of ultrasound greater than 20,000 Hz. तो हम लिखेंगे sound of frequency sound 750 Hz have low pitch. 750 Hz, the sound of frequency is low pitch. Next, the vibrating source on a ship produces sound wave that travels through the ocean. Wave produces longitudinal wave. The wave produces longitudinal wave. What is meant by the term longitudinal wave? 3 marks for longitude. Mm, It Longitude. has, and it has compression and refraction both in it, Or and the particles vibrate. their particles are They vibrate. vibrate. In which way they vibrate? Parallel or It, perpendicular? In longitudinal wave, the particles vibrate parallel. देखेंगे, the wave in which particle of medium vibrate, particle of medium vibrate parallel to the parallel to the direction of propagation of wave. Propagation of vibrate parallel to the direction of propagation if it has compression and rare has compression and rare factor has the frequency of the sound wave is 800 hertz. Frequency of the sound is 100. The speed of the sound in air is 30 meter per second. State a typical value for the speed of sound in liquid. जी बच्चे लिक्विड में कितनी होती है वैल्यू sir, 950 लिखते हैं. कितनी 950. वैसे मैं जो लिखता हूँ एंड होती है 1000. Next, using your value from B part 1, calculate the wavelength of the sound wave. And wavelength आपने find करनी है. Know the formula for wavelength. lambda E by F. B is thus जो भी हमने की होगी 300 and the frequency is 800. Already given. 15 over 8 आ जाएगा. That is 1.87. 8.5. So 1.87, that is 1.87
Confusion? No. Next is circle two of the following that apply to an ultrasound wave traveling in ultrasound के बता कौन सी properties. The frequency of ultrasound is know the frequency greater than Uh, 20,000 hertz. तो इसमें so से 35. 5,000 वाली Huh. है. 1000. and Yes. and the ultrasounds are Long. longitudinal wave. Yes. Calculate the wavelength in vacuum of X-rays of frequency is. So we know that wavelength is by F. X-rays all electromagnetic power 8 and their frequency 1.3 power 17. So the answer is Exactly. so lambda equals V over F. F is the 2.3 multiplied by 10 raised to power in 1, 2, 3, 4, minus 9. 2.10 raised to power. Next, a dentist takes an X-ray photograph of a patient, saying why it is safe for the patient to be close to the X-ray source, but the dentist must stand away from the source. कहते हैं कि पेशेंट के लिए तो एक्सरे सोर्स के पास होना सही है, लेकिन जो डेंटिस्ट डॉक्टर है के लिए वो इट शुड बी स्टैंड अवे फ्रॉम द सोर्स. Because it would be dangerous. फॉर व्हाट? फॉर जस्ट फॉर डेंटिस्ट. No. Something here. लेकिन वो कह रहे हैं पेशेंट जो है वो उसके क्लोज होना चाहिए एक्सरे सोर्स, जबकि डेंटिस्ट जो है वो क्यों? आइडिया. No. देखिए पेशेंट तो कभी कभी जाए, जो डेंटिस्ट रेगुलरली उसने एक्सरे उससे ज़्यादा जो है एक पेशेंट ने तो बस एक दफ़ा ही करवाना है ना कि उसका तो क्लोज होना ज़्यादा वो हार्मफुल नहीं होगा एज कम्पेयर. तो हम लिखते हैं द पेशेंट इज ओनली एक्सपोज टू एक्सरे. पेशेंट ओनली एक्सपोज एक्सरे फॉर एक्सरेज फॉर short time. Short, but the dentist would be exposed would be exposed many time during the day. Many time during many time during the day. State with reason why microwave ovens are designed only to for clothes. ये ऊपर वाले पार्ट की समझ आई है सी वाले की. G. अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं. स्टेट विद रीजन व्हाई माइक्रोवेव ओवन आर डिजाइंड ओनली टू वर्क with
डोर क्लोज्ड, जब आप माइक्रोवेव डोर क्लोज करें, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि माइक्रोवेव्स आर डेंजरस। Microwaves are just and can heat body can heat body tissues can heat body tissues. The oven can only work can only work when the door is closed, and microwave can no waves cannot. Next is sound is longitudinal wave. Sketch a representation of longitudinal wave on your sketch. Have to show the wavelength, compression, rarefaction से ऊपर बनी होती हैं. तो fraction, then fraction, Compression. then rarefaction and here से आगे. जरा आपने ज़रा नीट करके बना. तो चलें एक और जैसे ऊपर वाला जो बना हुआ है ना पैटर्न. Okay. So this is the compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression. Wavelength is the rarefaction. Next is a longitudinal wave passes from one medium to another medium. The speed of the wave is slower in the second medium state. What happens to the wave frequency? फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, तो wave is moving from one medium another medium. सोचे आप याद रखें फ्रीक्वेंसी जो ever there is a change, frequency stays the same. Now we know that V equals f lambda, all where frequency is constant proportional to the lambda. So state the frequency of the wave, the wavelength of the wave. Now if the wave speed decreases, क्या होगा ना, it's slower हो रही है. So V proportional to lambda decreases, wavelength also decreases. सही इसकी. Now Yeah. state a typical value for the speed of sound in air. Speed of sound in air is around 40 meter. Next is the left hand column of the table shows some possible speed of sound waves. In the right hand column, write down the medium sound wave as this speed used from solid liquid. ये बात आपने ना याद कर ली. We know that 1500 meter per second speed of sound in liquid.
and 5,000 solid and 300 to 340 जो वो आपने लिखा. Next, represent a series of compression and rarefaction of the sound wave. On figure 6.1, mark with letter X and Y the midpoint of the two rarefaction. So this is the first rarefaction. This one is second rarefaction, not the compression. Next is state in term of pressure. What is meant by rarefaction? Rarefaction is the region where the pressure is minimum. So the region where pressure is pressure is minimum. या कैसे is low. Astronauts set up a mirror on the surface of moon. एस्ट्रोनॉट ने क्या किया है? बना देते हैं उन पे एक मिरर लगा दी. One is the astronauts set up a mirror on the surface on the moon's surface. Laser beam is transmitted from the Earth surface to the mirror. ये अर्थ है. अब यहाँ से एक लाइट जाए मिरर पे हिट करेगी तो रिफ्लेक्ट के वापस आ रही हो. On a certain day, the time between the transmitting beam from a point on the Earth's surface and the receiving reflected signal कितना time लगा. Speed of the laser is this. Calculate the distance. इसमें भी ये होगा. The distance covered by the laser pulse E plus T आने जाने दोनों equals speed into time. So 2D equals VT. Distance equals V over speed is 10 power. Time is 0.56 over 2. चेक करें क्या आता है. 3.842 multiplied by 10 raised to power 8. 3.8 into 10 power 8 meter. Next is a loudspeaker produces a sound wave of constant frequency. It, what is meant by frequency? Frequency का क्या मतलब होता है? सर जितनी wavelengths गुजरेंगी 1 सेकंड. आपकी आवाज सही नहीं आ रही. सर जितनी वेव फ्रंट्स गुजरेंगी 1 सेकंड में. हाँ, the number of wave front. The number of waves या wave front ज़्यादा wave fronts passing through a point per unit time. The number of wave fronts means frequency equals number of waves divided by time from 1 over. Next is the sound waves travel in air towards a barrier with a small gap at its center. Figure 7.1 represent the compression of the wave traveling towards the barrier. One is related to the diffraction, and we know that diffraction में क्या होगा. ये wavelength, अब देखें size हमें gap width is smaller than the wavelength. तो हम कहते हैं कि wavelength है greater than the gap width picture. So state what is meant by the compression. Compression क्या होता है? The region where pressure is region of
longitudinal longitudinal wave where pressure is maximum or higher. The width of the gap is smaller than the wavelength. ये इन्होंने mention कर दिया है कि wavelength is greater than the gap. Draw the pattern of the compression after the sound wave passed through the gap. तो diffraction होगी कि नहीं होगी? जी माहिदा, diffraction होनी चाहिए कि नहीं होनी? Sir, no. Why no? वेवलेंथ तो गैप को तो एक पे नहीं होना देखिए चाहिए। वेवलेंथ ये कंडीशन ही यही कल से मैं बता रहा हूँ कि जब भी वेवलेंथ गैप के साइज से ज़्यादा होगी ना इट विल शो डायफ्रैक्शन। इफ द वेवलेंथ इज लेस देन द गैप विड्थ फिर डायफ्रैक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन ये और ऐसे थोड़ी ना। नहीं नहीं ज़्यादा होगी बल्कि क्योंकि वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप विड्थ। वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप विड्थ। ये याद रख लें दिस इज द कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन। क्या कंडीशन है बच्चे पढ़े? ये वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन द गैप विड्थ। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी सर। क्या कंडीशन है दोबारा बताएं। सर वेवलेंथ इज बिगर देन गैप विड्थ। हाँ, और वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस द टू। ऐसे याद रख लें जैसे देखें कि ये छोटा सा डोर है स्मॉल साइज का। अब इसमें से एक हैवी सा मोटा सा बंदा इसने गुजरना है तो वो इसके डोर के जो एजेस है उससे हिट करेगा कि नहीं करेगा? यस। हाँ, अगर वेवलेंथ मतलब उसका साइज ज़्यादा है ना तो वो इधर उधर डायफ्रैक्ट होगा। अगर उसका साइज कम होगा गैप के साइज से निकल जाएगा। नहीं होता? जी। बस ये याद रख कि इफ द वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप साइज so it causes diffraction. If the wavelength is less than the gap width, so there will be very little diffraction only at its corners. Next is the barrier is adjusted. अब जरा देखें क्वेश्चन पार्ट टू में the barrier is adjusted so that the gap becomes wider. अब गैप क्या हो गया है? वाइडर हो गया। तो अब क्या होगा? सर अब डायफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? नो। तो हाँ बिल्कुल थोड़ी सी होगी ओनली एट द एजेस। तो हम कहेंगे लेस डायफ्रैक्शन। क्या? डिस्क्राइब हाउ दिस अफेक्ट द पैटर्न ऑफ कंप्रेशन। तो हम कहेंगे लेस डायफ्रैक्शन है तो देयर विल बी लेस कंप्रेशन। नेक्स्ट इज the frequency of the sound wave is 6800 hertz. The speed of the sound in air is 340. Calculate the wavelength of sound wave in air. Wavelength of the sound wave is lambda. Lambda equals by f. Now v is 40 divided by 600. करें क्या आता है आंसर? 0.050। 0.550 meter. State the typical value of speed of sound in liquid. Liquid में कितनी? 1500। 1500 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी हैं बच्चे। अब इसके बाद जस्ट 5 पेजेस रह गए जी। नेक्स्ट क्लास में। सर जी। खुदा सर थैंक यू।
कल हम जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें ज़रा माइक ऑफ रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो एक्सप्लेन द टर्म कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है? द रीजन इन विच द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर। कंप्रेशन में molecules are very close to each other and have high pressure, while in rarefaction, molecules are further apart and have low pressure. प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और बी पार्ट में बचे हैं a musical instrument emit a sound with a frequency given है, the speed of sound is given, you have to find the wavelength. We know the formula v equals f lambda, lambda equals v over f. E is 340, frequency is 4.4 10 power 3. Divide them, you will get 0.077 hertz. Next, the frequency of the sound emitted by the instrument changed to 5.1 kilohertz. यह फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। पहले वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी थी 4.4 kilohertz. It means frequency increases and the amplitude का मतलब loudness. Amplitude depends upon loudness, depends upon the amplitude and pitch depends upon the frequency. कहते हैं loudness, the amplitude of the sound is in amplitude भी ज़्यादा हो रहा है और frequency भी ज़्यादा हो रही है। तो the speed of the sound is stays the same and the wavelength of the sound decreases. ठीक है, दोबारा ज़रा क्वेश्चन को देखें। कहते हैं the frequency of the sound emitted by the instrument is changed to 5.1 kilohertz. ठीक है, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी पहले से ज़्यादा हो गई है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज इन लाउडनेस भी अब बचे जो आपके पास ऑफ द साउंड इज इंक्रीज विदाउट कैलकुलेशन स्टेट व्हाट हैपेंस द स्पीड ऑफ साउंड तो चेंज क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड है उस टाइम चेंज होगा व्हेन दे यहाँ पे मीडियम में चेंज नहीं आ रहा और वेवलेंथ ऑफ द साउंड अब बचे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है इक्वल्स एफ लैम्डा नाउ इफ यू इंक्रीज ऐसे लिख देते हैं एफ इज इक्वल ई बाय लैम्डा अब बच्चे अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लेंथ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी चीज़ कम हो गई है तो देयर प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इज द सेम द वेवलेंथ ऑफ द साउंड increase. Next is the speed of sound in air is 340. Calculate the range of wavelength for the sound that are audible for the healthy human. जो ह्यूमन ईयर्स हैं रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब हम पहले निकालते हैं लैम्डा इक्वल्स वी ओवर एफ। तो वी इज़ 340 एंड फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं 20। 340 डिवाइड बाई 20 द आंसर इज 17। इसका मतलब है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज the wavelength is 17. Now V over F again. V is 340. Now we use the frequency 20,000 hertz. So the answer becomes 0.017. So at a frequency of 20,000 hertz, the wavelength is 0.017. So the wavelength ranges from 0.017 to next. इसमें मैंने important लिखा हुआ है state
Sound waves are longitudinal wave. Describe how longitudinal wave differs from the transverse wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चे क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, particle vibrates perpendicularly the direction of motion of wave and consists of crust and trough. Next, figure 6.1 shows a band in front of the building. बिल्डिंग के सामने ये वाले हैं और एक साइड पे ये पर्सन है। द ड्रम प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी साउंड, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, कम है। अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, दीज साउंड्स आर इक्वली लाउड, लाउडनेस सबकी सेम है लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक की कम है। मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रम की सी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वो डायफ्रैक्शन। A young man at the side of the building hears the drum but not the high frequency sound from the other music instrument. Explain why this happened. तो आपने कहना है the drum produce sound of longer wavelength and longer wavelength diffract more. यहाँ पे क्या लिखा है, the drum produce long wavelength sound, जैसे भी कर सकते हैं sound of longer wavelength, and longer wavelength diffract more because their wavelength become comparable to the size of corners. So low frequency of sound of drum spread around the bit. तो ड्रम है ना, की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वो कॉर्नर से स्प्रेड होके उस पर्सन तक चली। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हैव शॉर्टर वेवलेंथ सो डायफ्रैक्ट लेस एंड it blocked by the build. Next is figure 4.1 shows a loudspeaker that producing a sound wave in air of 15,000 hertz. तो इसमें एक लाउड स्पीकर है जो साउंड प्रोड्यूस। डिस्क्राइब हाउ द कोन ऑफ लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस दिस साउंड। अब बच्चे, हम जो लाउड स्पीकर है ना, तो हम कौन सा करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर, एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन द लाउड स्पीकर कॉइल, करंट प्रोवाइड किया और कॉजिंग द कोन टू वाइब्रेट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में उसकी डायरेक्शन और मैच हो रहा होता, तो causing the cone to vibrate. The vibrating cone move forward and backward. जो cone है ना, वो forward and backward. They will start to move for back and forth. And the vibrating cone move forward and backward and pushing and pulling the air. तो इसकी जो surrounding में air है ना, जब वो forward move करेगी compression, backward move करेगी तो causes rarefaction in the air molecule. So it means the disturbance in the cone produces compression and rarefaction air molecule. And we know that whenever there is a compression and rarefaction produces a longitudinal wave, sound is longitudinal. This creates compression and rarefaction in the air which travels outward as a sound wave. इसकी वजह से sound produce. तो हमने क्या किया? We provide the alternating current to the cone start to vibrate forward and backward. Due to the vibration of the cone, the air molecules start, the air molecules will disturb, and due to the disturbance in the air molecule produces compression, rarefaction. So the compression and rarefaction creates a sound. Next, the speed of sound in air is 330. The wavelength is, we have to find the wavelength. Lambda equals V over F. V is the 330 and frequency is already given 15,000 hertz. Divide them, you will get
0.022. The loud speaker is placed in a considerable distance to the left of the barrier with gap. मतलब आपने बीच में गैप रख दिया है, में से लाउड स्पीकर से उस गैप में से अपने साउंड ट्रैवल करे. The width of the gap is double the wavelength of the sound. ये आपने याद रखना. कंडीशन फॉर, अभी मैं पढ़ा भी रहा था, कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, ये जो वेवलेंथ है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गैप विड्थ. तो वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और गैप साइज कम होना चाहिए. जबकि यहाँ पे क्या है, द विड्थ इज डबल टू द वेवलेंथ. ये ऊपर वाला, गैप विड्थ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साउंड, तो फिर कोई भी डायफ्रैक्शन या कम डायफ्रैक्शन होगी. तो हम क्या शो करेंगे, here we draw the for three wavefront, the wavelength lambda, and now we know that the gap width is double to the wavelength. डबल होने की वजह से ना, you have to decrease the distance. क्या करें, आपने मेजर कर लेना. If the distance between the gap is centimeter or 3 centimeter, का हाफ आप कर, हाफ ले लेते हैं. तो ये आपके पास बने. Now this one is the wavelength, and after passing through the barrier, wavelength सेम रहेगी. Okay, it causes very, produces very small diffraction on. So wavelength on both side must be same. एक पॉइंट याद रखना है, lambda must be shorter than gap width. वो मैंने ड्रॉ करके ये शो कर दिया कि this one is the gap width. So the distance between the two wavefront must be shorter than the gap width. Next is figure 6.1 represent a wavefront of sound wave traveling in air from left to right. So compression, rarefaction, ये भी मैंने करवा दी. ये कल हम माइक ऑफ था तो रिकॉर्डिंग से थिंग. हाँ जी, बस. थैंक यू.